Hello dear student, welcome to the online class of computer. I hope you all are fit and fine. Dear student, in this video we are going to learn chapter number 8, movements of sprite, which is the next part of chapter 7. चैप्टर 7 में आप लोगों ने देखा था स्प्राइट्स के कंपोनेंट्स, पार्ट्स कि स्प्राइट होता क्या है। अब हम इस चैप्टर में मूवमेंट्स ऑफ स्प्राइट यानी स्प्राइट्स की जो हरकत कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी विल सी दैट। सो आई होप यू विल पे अटेंशन टुवर्ड्स द वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द टॉपिक as well as in a better way. So dear student, in the previous chapter you were introduced to a simple programming language called Scratch. Let us now learn about changing the appearance, size, color of a sprite and much more. So in this video we are going to learn to create a new project changing the appearance of a sprite. So the first topic is creating a new project. If you are already working on a Scratch project and want to open a new project, follow these steps. Click on file menu and click on new option. A new project opens up with the default cat sprite. Dear student, now the second topic of this video, changing the appearance of a sprite. You can either change the look of a sprite or add a new sprite in Scratch. These different looks of a sprite are known as its costumes. Okay, the look blocks menu, आप देख सकते हैं यहाँ कॉस्ट्यूम का ब्लॉक बना हुआ है. Okay, so here you will find the looks of a sprite, different looks of a sprite. Now the looks blocks menu has blocks that can change the look of a sprite, and the costume of a sprite are visible under the costume tab. ठीक है, जो कॉस्ट्यूम है वो आपको कॉस्ट्यूम टैब में मिलेगा. नाउ लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्राइट. आप कॉस्ट्यूम टैब में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ दिखाई देगा. So dear student, you will see that the costume list has two costumes of default cat sprite. यानी आपको by default पहले से दो cat sprite दिखाई देंगे. Under the new costume section there are 4 buttons. First button is choose costumes from library. Then you can see it is highlighting choose costume from library. Then second button is paint new costumes. It's look like a brush. Then the third, upload costume from file. So you will upload from file. And the fourth one, it's camera. So it's a new costume from camera. So these 4 buttons are there in new costume section. Now click on the choose costume from library button. Scratch has an inbuilt library where it stores various costume of sprites. The costume library window appears. You can choose any options from the categories section on the left panel of the window. आप categories देख सकते हो, animal, fantasy, right? Letter, people, things. Okay, तो ये आपको categories मिलेंगी. Here we have selected the cat flying A ऑप्शन फ्रॉम द एनिमल कैटेगरी. आप एनिमल कैटेगरी को जब क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट को क्लिक किया हूँ तो यहाँ आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है. लेकिन अब मैं एनिमल में जाऊँगा तो आपको यहाँ फ्लाइंग कैट आप देख सकते हैं फ्लाइंग कैट है. इसको मैंने सेलेक्ट किया हूँ. उसके बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा. जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आपका जो थर्ड कॉस्ट्यूम दिखाई देगा वो फ्लाइंग कैट होगा. यानी आपके 2 पहले से बाय डिफ़ॉल्ट थे और ये तीसरा ऐड हो गया. अब इसमें जो स्प्राइट है आप इसको डिलीट कर सकते हैं. आप इसके टॉप पे देख सकते हैं क्रॉस बना हुआ है. आप जैसे उस क्रॉस को क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा. ओके, यू कैन सी ऑन ईच एंड एवरी स्प्राइट देयर इज क्रॉस इज मेड. यू जस्ट क्लिक इट ऑन दैट क्रॉस, द कॉस्ट्यूम विल deleted.
So I'm going to delete, yes, the two costumes. Now I'm having only flying cat. Okay, now I will create the script for the sprite. Now I'm going to click on the script and click the block motion. So I will click on the motion block. After clicking on the motion block, I will create the script. First I will drag move 10 step, then I will go to the looks. Okay, so I will choose next costume. I will scroll down, I will find it out where it is, next costume. Okay, I place under move 10 steps, then change color effect by 25. Then I will go to again motion and I will select if on edge bounce, यानी जैसे वो edge पे पहुँचेगा तो bounce करके फिर घूम जाएगा cat. Okay, that is the command or that is the block. Now I made the script for the sprite. Now my script is ready. When I will click it on that block, my sprite will do the action. Now I'm clicking it, it's moving 10 step. When it is reached to the edge, it will bounce back, and you have seen that it every step it changing its costume with effect. So dear student, I hope you have understood creating new project and changing the appearance of a sprite. So I hope, dear student, you all have understood these two topics, and I hope that you will practice these two topics in your computer. So dear student, that's for all. We will see the next topic in the next video. If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching the video. Have a nice day.